Okay. Someone needs to tell me if you are able to see the shared screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. That's great. Okay, so I think maybe I have not mentioned it, but a couple of announcements. We have 3 TAs now, 3 TAs, and these 3 TAs are Munif, Mujtaba, and Dua. So their office hours and links to the office hours, etc., are updated online. I think both on Piazza and as well as LMS. Um, so on that note, I would like to mention that please make full use of Piazza. Please use this. There is a lot of people there who can ask questions, and people are asking questions and discussion going on. Other people can answer. So use this to your advantage. We have this resource available. Use it as much as you can. Um, Also, we are done with quiz one. Done with quiz one. We have another one on next Monday. Another one next Monday. Okay. Homework one also submitted. Done with homework one. Done with homework one. And homework two already out. So simple questions on homework two. In homework one, what um, we learned about some principles of counting, combinations, permutations, basic counting principle, etc. Homework 2 is simply an extension of that. So homework 2 is quite simple. You just have to use those same basic counting methods, the counting methodology that we have developed in the first chapter of the book, and then you have to calculate the probabilities. And how do you actually calculate those? You should be able to attempt all of those questions, but maybe in some of those questions you would not know how to exactly calculate the probability, although we had mentioned that earlier when we were talking about first chapter. So today what we are going to cover is how do you use the basic counting principle and combinations, permutations, and other counting methods to compute the probabilities of problems that may not seem very easy or straightforward right away. Okay? Before we do that, what I would like to also mention is that course in probability, any course in probability is generally considered to be very, very dry. And because um, you might have seen in the first four lectures that we have been talking about coin flips and dice rolls. So students have a hard time relating what is a coin flip or a dice roll, and we will talk about playing cards also. Playing cards. So 52 card set, you have to draw a specific card. How many ways you can draw a specific? So people get frustrated, why we are doing this, why we are doing all of these countings. And we also do, balls in urns or bins or boxes. Um, so what is the use of that? So this is very boring or frustrating, or people are unable to relate this to practicalities. However, um, this gives us practice to solve similar questions which have direct practical applications, direct applications. And the direct applications could be uh, queues in a bank, how much time you have to wait in a bank if there is a specific service time,
that the teller at the bank takes with each customer, or how long you have to wait in the PDC queue in order to get the meal. Um, Similarly, if you are accessing a website and you are sending a request using your mobile phone or your computing device through your browser, how much time would it take to load the web page? Would it take 10 milliseconds? Would it take 100 milliseconds? Would it take 1 second, or would it take 1 minute? You know, so modeling of the web servers and the browsers, that can be done. Similarly, if you are sending data from one place to another place, which could be a Word file, which could be an email, which could be a WhatsApp message, which could be a TikTok video. So if you are sending this data from one point to another point, this data is in the form of bits. What is the percentage of errors when you are sending the bits from one computer to another computer, or one device to another device? Probability theory will answer that. And another very interesting practical application is about sales forecasting and prediction. So think about the chain stores, for example, Al Fatah in Lahore, or Carrefour in Lahore, Islamabad, Karachi, um, or service shoe store which has shoe stores all over Pakistan. People go and purchase the specific shoe with the specific size. So how do they know how the sales are happening, what kind of sales are happening, so that they can restock the shoes in particular stores? Some stores might have more sales as compared to other ones. So based on the historical data, can you do some sort of forecasting? Can you do some forecasting? And if you can do some good forecasting, maybe you can adjust your supply chain. कि फैक्ट्री से जूते निकल के आ रहे हैं और वो मुख्तलिफ स्टोरों में जा रहे हैं, किन स्टोर्स में भेजने हैं, कौन से साइज भेजने हैं, कहीं नहीं भेजने हैं, and things like that. So you can do a lot of sales forecasting and prediction based on that. Similarly, if you invest money in the stock market, Pakistani stock market, or some other stock market, um, Pakistani stock market has been doing very well in the last year. It has done really, really bad in the 2 years before that. But what would be your expected profit when you invest some money in this stock market and build a portfolio of stocks that you purchase in the stock market? How do you compute that expected profit? So all of those questions can be answered, and much more relevant to the present day situation. What is the likelihood of a person suffering from coronavirus? That's also an answer, which has a probabilistic sort of explanation. Okay. So there are many other important applications. Okay, so you can answer all of those questions. Directly answering those might not be the most feasible way. You first have to develop the theory by using these, by practicing over these very simple abstract kind of situations. And these abstract situations, they will probably not happen in practice. They unless of course, if you are in a casino or a gambling city. So there you get money for playing cards as well. You get money for rolling the dice as well. But in real, non-gambling type of situations, there are many applications where you will see the use of probability and counting, um, and then you can compute those by using these abstract models that you have developed from these abstract problems. Okay, so I'll talk about some basic definitions we have earlier talked about. It's a quick revision of that as well. Some basic definitions. Okay. Random experiment. Anyone can explain what is a random experiment? Maybe in the chat window. Random experiment. What is a random experiment? Well, random experiment is an experiment whose outcome or whose outcome is not predetermined. पहले से आपको पता नहीं है क्या होगा.
So tossing a coin is a perfect example of a random experiment. You don't know whether you will get a head or a tail. An experiment whose outcome is unknown. Thank you, Ibrahim Mozam. So an experiment whose outcome is unknown. Outcome is unknown. Okay. So what is an outcome? What is an outcome? An outcome is basically the result of the random experiment. Is the result of a random experiment, and every random experiment will have a set of outcomes that you can get. Okay. So then we talk about sample space. What is a sample space? So sample space is the set of all possible all possible outcomes, all possible outcomes of a random experiment, all possible outcomes of a random experiment. Okay. So outcomes जो हैं इनको हम sample points भी कहते हैं, sample points. कि ये सैंपल स्पेस है जिसमें सारे के सारे एक सेट है, जिसमें ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है. डाइस रोल कर दें, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. ओके, there are 6 possible outcomes. The set of all those 6 possible outcomes is called the sample space, and each of those outcomes is also called a sample point. Sample point outcomes, we use this interchangeably. So इसको denote करते हैं s या ओमेगा से, और यू कैन यूज एनीथिंग, टिपिकली इससे डिनोट करते हैं, अक्सर बुक्स में आपको यही नजर आएगा. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एग्जैक्टली when you perform the experiment, exactly one outcome is produced. और हम कहते हैं कि occur की है. So that outcome has occurred. One outcome occurs, one outcome is produced when you perform the experiment. On performing the experiment. Okay. Now, so that means that when you perform an experiment, you will get a sample space S, and you will get many different outcomes. ये बहुत सारी इसकी outcomes हैं, ठीक है, ये बहुत सारी outcomes हैं, and the superset of all of these outcomes, the full set of all these outcomes is called the sample space. उसको हम sample space कहते हैं, ठीक है. Now let me also define what is an event. Event क्या चीज है? Event is a subset of S, a subset of the sample space, okay? और ये subset जो है empty भी हो सकता है, और ये subset जो है full set भी हो सकता है. Full set means के इसमें पूरा का पूरा ये S आ जाए, ठीक है. It can be an empty set, it can be equal to S, so event is a subset of S with 0 or more outcomes. ठीक है, 0 or more outcomes. So for example, so roll a dice. What is S? S is 1 2 3 4 5 6 sample space. This is our sample space जिसमें सब के सब outcomes आएंगी. This is our sample space, and each of these is a sample point or outcome. कुछ भी कह लें इसको, sample point or outcome. I can define many different events in there. An event, example event E could be something which consists of these two outcomes from the sample space. E is an event which consists of 2 and 3. So जो हमारे पास sample space है, this is our sample space. इसमें 1 2 3 4 5 6, these are 6 sample points, and my event E, this is our sample space, and my event E is basically 2 and 3, the set of 2 and 3, this is our event E. So you can see that E is a subset of S, and E contains these two outcomes. ठीक है.
अहमद जुबैर, you have a question, please go ahead. हाँ, मेरा सवाल ये था, इट्स ट्रिवियल बट जो एम्प्टी सेट है, लेट्स से कि वो इवेंट है एक, ठीक है, एम्प्टी सेट, डज इट ऑलवेज अकर या डज इट नेवर अकर? It never occurs. Empty set will never occur, and sample space will always occur. इसलिए ये क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पहले ये कहा कि exactly one outcome is produced. इसका मतलब है empty set में तो outcome होती ही नहीं है कोई भी. Empty set तो empty है, उसके अंदर कोई outcome नहीं है, which means के exactly one outcome is produced, which means के sample space के अंदर से, सैंपल स्पेस में से कोई ना कोई एक आउटकम आनी है, और वो लाजमी आनी है, which means के आउटकम विल, any outcome in the sample space will occur. ठीक है? I'm also going to note here is if any of the outcome contained in event E occurs, हमें पता है कि एक ना एक आउटकम तो आनी है, हो सकता है वो ई में हो सकता है वो ई में ना हो. If any of the outcome contained in event E occurs, then we say that event E has occurred. Event E has occurred. ठीक है? तो इस एग्जांपल से अगर रिलेट करें, अगर हमारे पास 2 आ जाएगा तब भी हम कहेंगे कि ई अकर कर गया, अगर 3 आ गया तो भी हम कहेंगे ई अकर कर गया. हमें ये पता है कि दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते, because these are outcomes cannot happen simultaneously. Precisely, exactly one and only one outcome will occur in the sample space. तो अगर आप सैंपल स्पेस को देखें, सैंपल स्पेस खुद भी एक सेट है, वो भी एक इवेंट है, सो उसके अंदर से कोई ना कोई आउटकम तो अकर करेगी. इसका मतलब ये है कि सैंपल स्पेस विल ऑलवेज अकर. So sample space will always occur. ठीक है? So very important to note कि event E occurs when any of the outcome contained in E occurs. ठीक है? Now एक आपको एग्जांपल और दे देते हैं, and I will relate this to probability. What is probability? इसको sample space और event को हम probability के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? ठीक है? So let's say you have this sample space and you have some outcomes. ये कुछ outcomes हैं, ठीक है? ये कुछ outcomes हैं हमारे पास. ये हमारे पास कुछ outcomes हैं उसके अंदर, ठीक है? The exactly one of these occurs. So मैं define करता हूँ, कुछ 3 events define कर देता हूँ. So let's say I have this event E or A, I have this event B, and I have this event ये C. A, B और C, ये 3 इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है? So now if I assign a non-negative number, एक non-negative number सेट A को असाइन कर रहे हैं टू सेट A को आप असाइन कर दें, तो ये A को एक नॉन नेगेटिव नंबर आपने असाइन किया, सो मे बी दैट नंबर इज दिस, ये रियल लाइन है आपके पास और इसमें ये कोई नंबर असाइन कर दिया, मे बी इट्स 0.23, ठीक है? सो A को आपने ये नंबर असाइन कर दिया, ये वाला नंबर. दिस असाइनमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. कैसे वो नंबर असाइन किया हमें वो पता नहीं है. We don't know the process. We just know that एक इवेंट आपने पकड़ा है सैंपल स्पेस से, दिस इज योर सैंपल स्पेस, एक इवेंट वहां से पकड़ा और उसको एक नंबर असाइन कर दिया. सिमिलरली बी को लें और बी को जो है एक और नंबर असाइन कर दें, मे बी दैट नंबर इज स्मॉलर, मे बी दैट नंबर इज लार्जर. ओके, सो सिमिलरली सी को लें और एक नंबर उसको असाइन कर दें, हमें पता नहीं है कि ये नंबर क्या होगा, ठीक है? So these numbers will be assigned probability of A, probability of B, probability of C. In fact, ये हमारे पास horizontal line पे नहीं है. So height of these bars here, this would be the equal to the probability. ठीक है? So later on we will figure out कि ये probability जो है ये chance के equivalent होती है. And the chance can never be less than 0% and can never be greater than 100%.
So the probability will be confined between the numbers 0 and 1, between 0 and 1 inclusive, 0 and 1 inclusive. ठीक है? Now, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि sample space S is a set. Any event derived from S, any event from S, derived from S, यानी उसको हमने subset लिया है, is also a set. वो भी set of some outcomes हैं. जिस तरह यहाँ A is a set of these three guys, B is the set of these three guys, and C is the set of these three guys. So since any event is a set and S, which is the sample space, is also a set, so we can use set theory उस पे लगा सकते हैं and set algebra भी लगा सकते हैं. ठीक है? Sets की union होती है, sets की intersection होती है. So we can do all sorts of operations on these set. वही principles set theory के set algebra के यहाँ पे लगती हैं जो रेगुलरली हमने set theory की किसी क्लास में पढ़े होंगे. नहीं भी पढ़े तो कोई मसला नहीं, अभी पता चल जाएगा. So I'm also going to define what we call mutually exclusive events. What are mutually exclusive events? Those events which do not have no intersection. They have no intersection of points, no intersection of outcomes, no intersection of sample points, I should say sample points. No intersection of sample points or outcomes. ठीक है? So example here, ये जो हमने ऊपर पिक्चर देखी थी, so this picture A and B, ये A and B, if you look at A and B, they are mutually exclusive. B and C are also mutually exclusive. A and C are also mutually exclusive. इसमें हमने जो ये तीन events define किए हैं, these are all mutually exclusive. I can define an event which is not mutually exclusive with B and C. So for example, I can define this event, ये event D define करता हूँ. So D and A are mutually exclusive, but D, B and C, D is not mutually exclusive with B, D is not mutually exclusive with C. Okay, so mutually exclusive events कौन से होंगे? They have no intersection of sample points. इसका एक और भी मतलब है कि these two events which are mutually exclusive, हमें पता है कि पूरी sample space में से only one outcome will occur. तो इसका मतलब है कि दो sets हैं, दो events हैं which are mutually exclusive. एक के पास अपनी outcomes हैं, दूसरे के पास अपनी outcomes हैं. जाहिर है कि एक ही outcome आ सकती है, हो सकता है दोनों ही occur ना करें. But what is guaranteed is that two mutually exclusive events will not occur simultaneously. They will never occur simultaneously because you cannot have two outcomes. Two outcomes cannot occur in the sample space. Only one outcome will occur when you perform the experiment once. Okay? So mutually exclusive events, they have no intersection and they do not occur simultaneously. They never occur simultaneously. एग्जाम्पल क्या है? रोल अ डाइस, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए. ऐसा हो सकता है कभी साइमल्टेनियसली? ऑब्वियसली नहीं हो सकता. ठीक है? सो अहमद ताहिर ने पूछा है कि इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी will always be equal to 1? I will answer that now. By defining what we call collectively exhaustive events. Exhaust का मतलब ये सब कुछ खत्म कर देते हैं, exhaust कर देते हैं पूरी की पूरी sample space को. ठीक है? These are the events. Remember, events are sets. Events whose union is the complete sample space. S. ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस जो है ये आ जाती है अगर मैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूनियन ले लूं. सो नाउ आर बी एंड डी collectively
exhaustive? Yes or no? Answer in the chat window. No, of course not. A, B, and D are not collectively exhaustive. Are B and C collectively exhaustive? No, no, and no. Are A, B, D, and I'll show you the picture, collectively exhaustive? I'll show you the picture. A, B, and D, are they collectively exhaustive? No, they are not collectively exhaustive. Now I'm going to ask, oops. Are A, B, C, D collectively exhaustive? A, B, C, and D. चारों का अगर यूनियन ले लें तो are they collectively exhaustive? The answer is yes. क्योंकि चारों को अगर हम यूनियन ले लेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स उनके जो है इकट्ठे हो जाएंगे. And this is yes. This is of course no. ठीक है. Now I'm going to ask, slightly modify this question. A, B, C, are they collectively exhaustive? They are also collectively exhaustive. So D के अंदर आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा. D के अंदर आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि A, B, C वो इकट्ठे मिलके जो है वो पूरी सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देते हैं. So why are we giving you these two definitions, mutually exclusive and collectively exhaustive? ये अभी एक दो चैप्टर रुकते हैं, थर्ड चैप्टर में जाके पता चलेगा. So by the way, we are on chapter 2 of the book. Chapter 2 of the book. Most of the problems that you will see in the homework, they are also taken from chapter 2. They're also taken from back of chapter 2. You will find the solutions once again somewhere online. I strongly, very, very strongly suggest do not do that. Do not do that, please. Okay. You will hamper your own learning. ये आसान चीजें हैं, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करें, सीख लें, लाइफ सेट हो जाएगी. Okay. So, mutually exclusive, collectively exhaustive events. All right. Some examples. Obviously, examples के बगैर काम ही नहीं चलता हमारा. So, example. Coin toss करते हैं. Toss a coin. Toss a coin. What is your sample space? The sample space is head and tail. Only two sample points. Only two outcomes. Only two outcomes. Only two outcomes. ठीक है, ये तो हमें वैसे पता था. Why do I give this example? एक additional चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं, and that additional thing is that both outcomes are equally likely if the coin is fair. If the coin is fair, then we will say that both the outcomes are equally likely. जितना चांस उसका अकर करने का है उतना ही चांस दूसरी का अकर करने का है. ठीक है. Now you might say कि ये 50% है tail आ जाए, 50% है head आ जाए, या probability या chance that tail eye is 1/2, head eye 1/2. ये नंबर कहाँ से आए हैं? अभी we will explain that. हमें पता है ये, you know, it's natural to think कि head है या tail है, 1/2 chance है कि head आ जाएगा और 50% चांस है tail आ जाएगी. But where do we get this number? उसके लिए ये चैप्टर है, उसके लिए हम एक्सियम्स डिफाइन करेंगे कुछ. सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं. डाइस को रोल करते हैं. डाइस को रोल करें. व्हाट इज योर सैंपल स्पेस? द सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 6 outcomes all equally likely. All equally likely. Equally likely. Of course, if the dice is fair. ठीक है. Now, one more example. एक और एग्जाम्पल करते हैं. एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं जिसमें हम 3 कॉइन्स इकट्ठे करते हैं. टॉस 3 कॉइन्स collectively, simultaneously, together. एक साथ में. What is the sample space? I will not write it here. आपको पता है कि ये क्या होनी चाहिए. H होगी, ये एक सैंपल पॉइंट है. टेल हेड टेल होगी, ये एक और सैंपल पॉइंट है, एंड सो ऑन. How many sample points?
Answer in the chat window. How many sample points or how many outcomes in the sample space? 8. 8. Why? पहला कॉइन जो है दो वेज में आ सकता है, दूसरा कॉइन के भी दो वेज हैं और तीसरे के भी दो वेज हैं. बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल 2 times 2 times 2, 8 outcomes. All of those are equally likely. All of those are equally likely if the coins are fair. If the coins are fair. ठीक है? So it's reasonable to say, it's reasonable, लेकिन obviously मैथ ऐसे नहीं चलता. हम खाली reasonable से काम नहीं चलाएंगे, आगे इसकी explanation भी आएगी. Reasonable to say that chance of getting HTH is 1 out of 8. 1 out of 8. 1 out of 8. ठीक है. So हम इसको ऐसे लिखते हैं कि probability that you will get this particular outcome is 1 out of 8. In fact, all the 8 outcomes are equally likely. All the 8 outcomes are equally likely. Okay. एक और काम करते हैं, यहाँ पे define event A. एक event A को define कर देते हैं, which is HHTHTH. What is this event? Exactly 2 heads. Exactly 2 heads. इसके अलावा और कोई possibility है? इसके अलावा और कोई possibility है 2 heads आने की? There is no other possibility. या tail आखिर में होगा, या बीच में होगा, या शुरू में होगा. ठीक है? So there are 3 ways you can get exactly 2 heads. 3 ways you can get exactly 2 heads. It's also reasonable to say that exactly 2 heads occur. ये एक event है exactly 2 heads वाला. This event occurs, exactly 2 heads occur 3 out of 8 times. 3 out of 8 times. ठीक है? Everyone is okay with that? ये अभी हम रीजनिंग से कर रहे हैं, ये इंट्यूशन से ही बात चल रही है. अभी हमने इसकी कोई मैथमेटिकल प्रूफ भी नहीं दिया, कोई डेफिनेशन नहीं दी कि प्रोबेबिलिटी, ये डेफिनेशन ये 3/8 कहां से आ गया. लेकिन हमें ये पता है कि 8 आउटकम्स हैं, ईच ऑफ देम आर इक्वली लाइकली. अगर इन 3 में से कोई सी एक आउटकम आ गई तो event A will occur. Event A will occur if any of these outcomes, any of these 3 outcomes occurs. हमें पता है कि इसकी चांस भी होने के 1/8 हैं, इसके भी 1/8 हैं, इसके भी 1/8 हैं. So maybe 3/8 is looks like a reasonable answer to us. Reasonable answer to us. ठीक है? So ये जितनी हमने एग्जांपल्स की हैं, इन सब के अंदर outcomes, all the outcomes of an experiment are equally likely. Are equally likely. This is almost always the case, but not always the case. Almost always the case. ठीक है? और often the case, but not always the case. यहाँ पर तो अभी तक जो हमने examples किए हैं वो सारी की सारी हैं. So we will talk more about these equally likely outcomes. We'll talk more about that. ठीक है? So let me move to some aspects of sets. So we all know union of events. Since events are sets, so if we can talk about the union of sets, so obviously we can talk about the union of events as well. So union of events U से denote करते हैं इसको. ठीक है? So दो events define करते हैं. Define events E and F on a sample space. On a sample space S. एक sample space S के ऊपर दो इवेंट्स डिफाइन करते हैं E एंड F. ठीक है? सेट थ्योरी में कहती है कि E यूनियन F is also a set. Is also a set when if it is a set, then it is an event. Is also an event. सेट थ्योरी हमें यह भी कहती है E यूनियन F is a subset of S. ये दोनों चीजें हमें सेट थ्योरी बता देती है. ठीक है? नाउ हमने जब ये दो इवेंट डिफाइन किए थे E एंड F
two events defined E and F. E के अंदर कुछ sample points थे, F के अंदर कुछ sample points थे. So for example, if this was our sample space, this was event E, this was event E, and this was event F. ठीक है? So कुछ points, sample points F के अंदर थे, कुछ E के अंदर थे, कुछ दोनों के अंदर भी थे. ये कुछ common points भी थे आपके पास. ठीक है? So these are all sample points. These are all sample points. Okay. Nice. So a sample point in E union F, which is also an event, ये भी एक event है. A sample point in E union F is present in at least one of E or F. या E में मौजूद होगा या F में होगा या दोनों में भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक में जरूर होगा. ये जो ब्लू डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू डॉट्स लगे हुए हैं, these are the sample points which are part of E union F. ये सारे के सारे ब्लू डॉट्स जो मैंने दिखाए हुए हैं, all of these sample points are part of E union F. E union F consists of all of these. ठीक है? So we also say that event की occurrence की बात होती है कि ये इवेंट अकर किया है या नहीं किया है. ठीक है, तो हमने बताया था कि एक इवेंट अकर करता है अगर उसमें से कोई सी एक आउटकम आ जाए, एक भी आउटकम, उसकी कोई सी एक आउटकम आ जाए तो इवेंट अकर कर जाएगा. सो इवेंट E union F occurs if E occurs, which means कि E के अंदर वाला सबसेट जो है आउटकम्स का, उनमें से कोई एक आउटकम आ जाए, और F occurs, या F वाले पॉइंट्स में से कोई आ जाए, और बोथ अकर. एक केस ऐसा भी है कि जिसमें E और F बोथ अकर करते हैं. ये जो दरमियान वाले, ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, ये दरमियान में जो लगाए हुए हैं, सो दीज डॉट्स आर द वन, अगर उनमें से कोई सी एक आउटकम आ गई तो E भी अकर कर गया और F भी अकर कर गया. E भी अकर कर गया और F भी अकर कर गया. ठीक है, सो ऑब्वियसली एग्जांपल के बगैर नहीं चलेंगे. टॉस टू कॉइन्स, दो कॉइन्स टॉस करते हैं. ठीक है, सो डिफाइन कर देते हैं इवेंट E is HH and HT. ठीक है, ये क्या इवेंट है? दैट फर्स्ट कॉइन इज हेड. ठीक है, F भी एक डिफाइन कर देती हैं कि HHTH. F is an event that second coin is head. ठीक है, सो ये दो हमने इवेंट्स डिफाइन कर दिए हैं. हाउ मेनी पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस? हाउ मेनी पॉइंट्स? आंसर इन द चैट विंडो. हाउ मेनी पॉइंट्स in S? Answers in the chat window. Yeah, 4 points in the. How many points in E? 2 points, of course. And how many points in F? Also 2. How many points in E? How many points in F? Also 2. So E union F. How many points in E union F? H, T and TH. सेट की यूनियन में हम ये रेपिटेशन नहीं करते. सो दिस गाय H and H which is repeated between the two, इसको हम एक ही दफा काउंट करते हैं. सेट की यूनियन जो है, इसकी डेफिनेशन है ये. सो E union F has 3 points, has 3 of these outcomes. ठीक है, so if I ask you, okay, what is the probability that E occurs? What is the probability that E occurs? What is that probability? What is that probability? What is the probability of E? 2 out of 4. There are 2 sample points in E and 4 sample points total. 4 sample points total, so 2 out of 4. Probability of F, also 2 by 4. What is the probability of E union F? Chances that E union F occurs. Chances that E union F occurs is 3 out of 4.
this is the chances that E union F occurs. Chances that E union F. Kyun? Because there are 3 sample points out of a 4 sample points in the sample space. Okay. So, so everyone is okay with that? कोई सवाल? Excuse me, sir. Yes. सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होनी चाहिए ई यूनियन एफ की, क्योंकि 2 सैंपल पॉइंट्स तो कॉमन है यहाँ पे, हेड्स एंड हेड्स. किसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए? ई यूनियन एफ. ई यूनियन एफ में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं टोटल? सर 3 और उसमें 4. ये बात सर मुझे समझ आ गई, लेकिन सर वो 2 पॉइंट्स कॉमन नहीं है दोनों में, तो बात एक ही नहीं है. नहीं, 2 पॉइंट्स कहाँ कॉमन है? सर ई के अंदर भी हेड, 2 कॉइन टॉस में हेड इज फॉलोड बाय हेड. ई यूनियन एफ जो है वो एक इवेंट बन गया है, ये एक इवेंट है. अब आप उसको जी कह दें तो जी इज एन इवेंट कि ई यूनियन एफ. या आप ऐसे देख लें कि आपके पास एच एच है, एच टी है, और टी एच है, और टी टी है. ठीक है. एच एच और एच टी जो है ये आपके पास ये ई बना है, दिस इज ई. एंड एच एच और टी एच जो है ये आपके पास एफ बना है, दिस इज ई एंड एफ. ठीक है. ई और एफ का अगर यूनियन लेंगे तो आपके पास कौन से पॉइंट्स आएंगे? आपके पास ये वाले पॉइंट्स आएंगे. ठीक है. विच इज 3 पॉइंट्स. ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं. सो पूरी सैंपल स्पेस में से there are 3 sample points which belong to this event G, जिसको जो E union F है. So the probability of G वो होनी चाहिए 3 sample points हो सकते हैं. अगर 2 टेल आ गई तो G अकर नहीं करने वाला. अगर समझ आ गया मुझे सर, थैंक 2 यू. टेल आ गई तो वो नहीं अकर करने वाला. So this should be 3 out of 4. ठीक है. ये thank you, कंफ्यूजन sir. थी या कोई और? सर यही मसला था, वो मैं टेल को मिस कर गया था वो वाला पॉइंट. थैंक यू सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ये किसी और का सवाल है? यस किसी ने सर, hand मेरा raise एक किया? सवाल है कि ये जो ई एंड एफ है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना? देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है. आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस और नो? आंसर इन द चैट विंडो. देखते हैं आपके लोग क्या कह रहे हैं. आपके दोस्त दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि they are not mutually exclusive because they have a common thing and that common thing is HH. सही है. ठीक है. अगर इंटरसेक्शन उनका 0 हो जाएगा, अगर उनका इंटरेक्शन 0 हो जाएगा तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे. फिर वो म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स वाला कॉन्सेप्ट आता है ना यहाँ पे. जी 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 जी. अब वो इंटरसेक्शन ये भी आ रहा है यहाँ पर ना, अभी इंटरसेक्शन के अंदर वही आ रही है. सो जिस तरह यूनियन होती है इसी तरह इंटरसेक्शन है. वही एग्जांपल लेते हैं, 2 कॉइन टॉस करते हैं, ई और एफ ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं. नाउ आई डिफाइन ई इंटरसेक्शन एफ. इसको ऐसे भी लिखते हैं ई एंड एफ. दरमियान में कोई सिंबल ना भी डालें उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है. ये हैंड रेज है किसी का? ये बड़ी जबरदस्त किस्म की आपने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं और या पता नहीं नाम नहीं आ रहा आपका. प्रीवियसली सन ग्लासेस लगाई हुई थी? नहीं सर, पहले पूछा था क्वेश्चन, सॉरी. अच्छा पहला क्वेश्चन. ठीक है, सही. ओके. सो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास क्या आएगा? दिस इंटरसेक्शन इज द कॉमन एरिया बिटवीन ई एंड एफ, कॉमन points between E and F, common sample points between E and F. Okay, so intersection E intersection F is also an event, is a subset of F. This event occurs if both E and F occur. E occurs if both E and F occur. दोनों के दोनों को अकर करना जरूरी है. ठीक है. सो यानी अगर हम ये यही वाली एग्जांपल फिर दोबारा से लेते हैं. टिक 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 टिक. सो मैंने ये फिर दोबारा से ई और एफ जो है ड्रॉ कर दिए. कौन सा ऐसा इवेंट है जो ई में भी लाई करता है और एफ में भी लाई करता है? हो सकता है एक से ज्यादा हो लेकिन यहां पर एक ही है. सो इट्स दिस गाय, हियर. ये एच एच वाला जो है ये ई में और एफ में दोनों में लाई करता है, ई में और एफ में दोनों में लाई करता है. सो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ. सो ई इंटरसेक्शन एफ और ई एफ इज इक्वल टू दिस इवेंट इज इक्वल टू एच एच. ठीक है.
And what would be the probability of E and F together? This would be 1. There is only one way that it can occur. There is only one point in the intersection of E and F. This is 1/4. 1/4. Okay. So disjoint events are the same as mutually exclusive. Same as mutually exclusive. If you have not realized that कि disjoint events जो हैं वो same ही चीज है mutually exclusive होना, ठीक है? Define करते हैं. Again, toss two coins, ठीक है? 4 possible outcomes. Event E को define करते हैं head head, and event F को define करते हैं tail tail. ठीक है? Head on both coins, that's event E. Tail on both coins, that's event F. What is E union F? This would be HH or tail tail. Okay, both coins show the same face. Both coins show the same face. Both coins show the same face. What is the probability of E union F? अभी ऊपर हमने देखी है. Answer in the chat window. 2 out of 4. Thank you whoever has answered. Kab bin Abed, Hasan, Salman, etc. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया. Thank you very much. Now, E intersection F. Remember, अगर इनके दरम्यान में कुछ नहीं डाला हुआ तो intersection है वो. What is E intersection F? E intersection F is going to be an empty set. या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, null set. ठीक है? What is the probability of E and F happening simultaneously? It's 0 out of 4. 0 out of 4, which obviously is 0. The chance that E and F will occur simultaneously, the chance of that happening is 0. And we do know that. कि अगर 2 tail आ गए तो 2 head नहीं आ सकते भाई. अगर 2 tail आ गए तो 2 head नहीं आ सकते हैं. Okay? So we also say that E and F, they cannot occur simultaneously. Okay? E and F cannot occur simultaneously. और यही तो definition है disjoint events की या mutually exclusive events की. Okay? So this is great. Now, some revision of set properties. ये हमने कभी बचपन में देखी होंगी, शायद क्लास 5-6 से शुरू करवा देते हैं. One is if you have an event E and F, so E union F will be the same as F union E. ठीक है? और E intersection F would be the same as F intersection E. ठीक है? ये प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं? Commutative property. This is commutative property of sets. ठीक है? नहीं प्रूफ करेंगे, सेट थ्योरी में कहीं पे प्रूफ किया होगा. Now there is another property which is called associative property, which is E union F पहले ले लें और फिर बाद में G के साथ यूनियन ले लें. This is the same as E union F और G की पहले यूनियन ले लें और बाद में E के साथ यूनियन ले लें. This is called associative property. ठीक है? And similarly for intersection as well. Okay? Similarly for intersection as well. So E intersection F intersection G would be the same as E intersection F intersection G. So both of these are associative properties. Now I'm going to talk about what we call the distributive property. Distributive property क्या चीज है? यहाँ पे तो देखें E और F का पहले यूनियन था, बाद में G के साथ यूनियन है. डिस्ट्रीब्यूटिव में एक यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन होता है. So you can take E union F and then take the intersection with G. This is equal to, इसको अब हम ऐसे नहीं लिख सकते. E union F intersection G ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है? ये वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं, जो कभी शायद छोटी क्लासेस में किया हो.
आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम प्रूविंग दिस. अगर कोई भूल गए हैं या क्यूरियस हैं तो जाके देख सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेट थ्योरी हियर. सो दिस वुड बी E intersection G union F intersection G. This is called the distributive property or distributive law. Okay. Similarly, you can write an expression for E intersection F union G. इसके लिए भी लिख सकते हैं. I'm not going to write that here. ठीक है. Now, some more properties. Union of multiple events. Multiple events का union ले लेते हैं. Union of multiple events. ठीक है. So कैसे उसको define करते हैं? Union I is equal to 1 to n EI. ठीक है. यानी ये बहुत सारे आपके पास events हैं. E1, E2, E3, इन सब का आपने union ले लिया है. E1 union E2 union E3 union so on and so forth union En. इन सब का आपने यूनियन लिया. तो इस यूनियन को आपने कैसे लिखना है? इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. द यूनियन इवेंट आप उसको जो भी कह लें, एफ कह लें, जी कह लें, कुछ और डिनोशन करना है. दिस यूनियन इवेंट, दिस इज द यूनियन इवेंट. दिस यूनियन इवेंट अकर्स if any one of these guys occur. Any one. एक से ज्यादा अकर करें तब भी अकर करेगा, लेकिन एटलीस्ट एक ने जरूर अकर करना है. if at least one of the EIs occur. इनमें से कोई सा एक भी अकर कर जाए, एक या एक से ज्यादा अकर कर जाए, तो जीत गए. तो ये यूनियन इवेंट अकर कर जाएगा. यूनियन इवेंट अकर कर जाएगा. ठीक है. नाउ जिस तरह यूनियन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स है, उसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स भी है. इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स. इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल इवेंट्स, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन I is equal to 1 to n EI. This would be equal to E1 intersection E2 intersection E3. कोई सिंबल ना हो बीच में तो इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली होता है, all the way up to En. ठीक है. all the way up to En. So this event here, ये वाला इवेंट जिसको हम इंटरसेक्शन इवेंट कह रहे हैं, this intersection event occurs. This intersection event occurs when any takers चैट विंडो में लिख दें. कब अकर करता है? All of these occur when Qaim Saab, Hassan Saab, Shah Faraz, Ahsan, Shiza, Taimur, and everyone else, when all of the EIs, अगर एक भी छोड़ दिया ना, अगर एक भी रह गया तो इंटरसेक्शन इवेंट अकर नहीं करेगा. When all of the EIs occur simultaneously, इकट्ठे अकर करें, और वो सिर्फ उस वक्त अकर कर सकते हैं जब उनके दरमियान इंटरसेक्शन का कुछ एरिया हो. ठीक है. इंटरसेक्शन का कुछ एरिया होगा. नाउ कॉम्प्लीमेंट, ये भी सेट थ्योरी के अंदर कहीं पे देखा होगा. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इफ यू हैव अ यूनिवर्सल सेट और सैंपल स्पेस जिसको हम कहते हैं इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी. सो इफ यू हैव द सैंपल स्पेस एंड यू हैव इनसाइड दैट एन इवेंट E, ये एक इवेंट E है आपके पास. एवरीथिंग आउटसाइड E is E complement. Everything outside E is E complement. So E complement is basically S minus E. ठीक है. So E complement occurs. यहाँ देखें बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स होंगे. यहाँ पे E complement के कुछ सैंपल पॉइंट होंगे E के. ठीक है. E complement occurs when E does not occur. E कंप्लीमेंट कब अकर करेगा? उस वक्त अकर करेगा ये बाहर वाले जो ये ब्लू डॉट्स हैं इनमें से कोई एक आउटकम आ जाए.
इनमें से कोई भी एक आउटकम आ जाए, ई कॉम्प्लीमेंट विल अकर। बट बाहर वाली अगर कोई आउटकम आ गई तो अंदर वाली नहीं आएगी। फिर ई के अंदर जो आउटकम्स हैं, इस सर्कल के अंदर जो आउटकम्स हैं, उनमें से कोई नहीं आ सकती अगर बाहर वाली आ गई तो, और अगर अंदर वाली आ गई तो फिर बाहर वाली नहीं आ सकती। सो दोनों में से एक लाजमी अकर करेगा क्योंकि दोनों सैंपल स्पेस के अंदर हैं। ई कॉम्प्लीमेंट अकर्स व्हेन ई डज नॉट अकर एंड वाइस वर्सा। And one of E and E complement must occur, always occur, must occur। उन दो E complement नहीं अकर करेगा तो E अकर कर रहा है, E अकर कर नहीं कर रहा तो E complement अकर कर रहा है। ठीक है, so great, this is interesting। So as we said कि we often use Venn diagrams। ये Venn diagram है, this is a Venn diagram। Venn diagrams to facilitate set operations। So set operations को facilitate करने के लिए हम अक्सर Venn diagram इस्तेमाल करते हैं। Okay. Now I'm going to talk about this final couple of things here is De Morgan's laws। De Morgan's laws। I'm not going to provide the proof of these, but डी मॉर्गन्स लॉज क्या है? डी मॉर्गन्स लॉज जो है वो इस तरह से हैं कि इफ यू हैव ए यूनियन बी, एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें, तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि दिस इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड यू कैन प्रूव दिस। ये दो के लिए तो बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं वेन डायग्राम बना के। सो वेन डायग्राम बनाए, दिस इज योर सैंपल स्पेस एस, this is event A and this is event B। ठीक है, and this is A union B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो इन दोनों सर्कल्स के बाहर वाली चीज है, that is also the same as A complement intersection B complement। A complement intersection B complement। ये justify it to yourself by using the Venn diagram। justify at home, not too difficult, very easy, yeah। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस के लिए डी मॉर्गन लॉ नहीं है। डी मॉर्गन लॉ इज मोर जेनेरिक। ये भी हमने डी मॉर्गन लॉ ही इस्तेमाल किया है इसके अंदर, बट डी मॉर्गन लॉ इज मोर जेनेरिक। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास यूनियन हो दो से भी ज्यादा की, I इज इक्वल टू 1 to n ई आई, इन सब की यूनियन हो और आप उनका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल ई आई का कॉम्प्लीमेंट लें, ई वन का कॉम्प्लीमेंट लें, ई टू का कॉम्प्लीमेंट लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ ऑल द वे अप टू ई एन का कॉम्प्लीमेंट लें, और ये यूनियन जो थी इसमें आपने इंटरसेक्शंस कर देने। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हमने ऊपर किया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली if you have intersection I is equal to 1 to n ei, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो दिस वुड बी e1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन e2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन सो ऑन एंड सो फोर्थ यूनियन en कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, एग्जांपल ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो our favorite example, toss two coins, 4 outcomes, E is HH and HT। ठीक है, first coin is a head and F is HH TH। the second coin is a head, E intersection F is equal to HH। E और F का जो intersection है वो this is H and H, and E union F is HH, HT and TH। Yeah. So I'm going to draw this here। Okay. So you have HH, HT, TH and TT। Okay, and this is, ठीक है,
So this is your event E. अभी ये मैं event E जो है ये बनाने लगा हूँ. This is your event E. This is your event E. ये रेड में जो है. ग्रीन के अंदर इवेंट F करते हैं HH और TH. This is your event F. HH and TF. ठीक है. The intersection of E and F, the intersection of E and F is this guy. The intersection of E and F is this guy. ठीक है. This guy here. The intersection of E and F is H and H. Okay. And the union of E and F is वो रेड और ग्रीन वाले का यूनियन है. रेड और ग्रीन वाले का यूनियन है. ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं. डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं. E union F, which is these three guys, E union F, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बताता है? वो कहता है कि ये होगा E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट. E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट. एंड व्हाट इज E कॉम्प्लीमेंट? E कॉम्प्लीमेंट वो है जो रेड के बाहर वाली चीज है, इस रेड के बाहर वाली चीज है. और F कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो इस ग्रीन के बाहर वाली चीज है. और उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप आपस में लें, so you are only left with this guy. So this is this guy. This is this guy. ठीक है. So moving on, I'm going to talk about axioms of probability. These are not laws, these are not theorems. इनका कोई proof नहीं है. इनका कोई proof नहीं है. These are axioms. They come from common sense और वो हम use करेंगे. Before I provide these three axioms, there are three axioms of probability. Before I go for that, हम example फिर दोबारा से करते हैं. Toss two coins. Toss two coins. आज हमने बहुत दफा two coins toss कर लिए हैं, लेकिन चलें फिर कर देते हैं एक दफा. So 4 sample points. 4 sample points. Toss two coins, you get 4 sample points. Define an event G as HH. Define an event G as, say both the coins show the head. Both the coins show the head. Okay. What are the chances? What are the chances that G occurs? Answers in the chat window. Chances that G occurs. 1 by 4. 1 by 4. Yes, everyone is supercharged. Okay. So we say that probability of G is equal to 1 over 4. ठीक है. लेकिन ये कैसे हमने कह दिया? हमने तो कहा था कि probability ये होती है कि वो इवेंट को लेके एक रियल नंबर आपने बताना है between 0 and 1, वो probability होती है. How do I come with this number? Why not 1 by 8? Why not 2 by 3? Why not some other number? Okay. So ऐसा करते हैं कि let's repeat the experiment. Let's repeat the experiment n times. उसको n times repeat करते हैं. उसको n times repeat करते हैं. ठीक है. Let's say let G occurs. जब उसको हम repeat करेंगे ना, तो कुछ टाइम पे G occur करेगा, कुछ टाइम पे G नहीं occur करेगा. Let's assume that G occurs n of G times. ये एक ही चीज है. This is a function of G, n G times. ठीक है. This is not a multiplication. n G, not a multiplication. Not a multiplication. This is n G is, you know, function of G. Function of G. Okay. कुछ और भी कह सकते हैं इसको, जो भी आप कह लें, if this notation is confusing. Okay. Obviously NG जो है वो कितनी दफा G अकर करेगा? Has to be less than equal to n. Obviously जितनी दफा एक्सपेरिमेंट किया उससे ज्यादा दफा तो आपका G अकर नहीं कर सकता ना. अगर हर बार भी अकर करे तो ज्यादा इक्वल हो जाएगा. मे बी ज्यादा दफा होगा, ज्यादा दफा नहीं होगा. So we define relative frequency definition. Relative frequency definition, and this is also coming from common sense. The probability or chances of G occurring is the number of time
that G occurs, the number of times that G occurs divided by the total number of times, if you perform the experiment an infinite number of times. उसको infinite number of times experiment को कर दें और जितनी बार G occur किया है हम कहेंगे इतने परसेंट chance है G की occur करने का. This makes sense. This makes a lot of sense. Okay. Now, what is the guarantee that this expression here converges? There is no guarantee. There is no guarantee that this equation will converge. n जो है वो infinity के नजदीक पहुंच रहा है, ठीक है, हो सकता है ये कहीं और दूर चला जाए फिर वापस आ जाए फिर. So there is no guarantee for the convergence of this, ठीक है. So that's a mathematical lacuna, I would say. Okay. It's also impractical to perform the experiment infinite times. We won't be able to perform the experiment infinite times. So yeah, this is a problem. इसको problem को handle करने के लिए, but we also have to move forward with some definition of probability. Yeah. So इसको handle करने के लिए we define the axioms. And these three axioms are: axiom 1 is कि, and this axiom is that the chance of something happening, the probability of something happening, is between 0% and 100%. Makes a lot of sense. 0 is less than equal to probability of E, where E is an event. Okay? Where E is an event on sample space S. एक sample space है आपके पास S, उसके अंदर event E है, उसके अंदर event E occur करता है. Okay? Now, so is everyone able to see the screen? Yes. Yeah. Yes, sir. Great. Afan Ashraf ने क्या सवाल पूछा है? So P of G will not get closer and closer to 0.25. It will get closer and closer to 0.25. It will, but there is no guarantee that it will not bounce back and then come back to 0.25. We have to make sure कि हम इस convergence को justify कर सकें, इसको prove कर सकें. ठीक है? We will not be able to do that in all the cases. So that's why we have these axioms. Very simple rules. Very simple rules. उनको use करके everything else will get defined out of that. So axiom 2 is probability of S is 1. This is again very simple. What this is saying is, पहला axiom क्या कह रहा था कि the chance that some event will occur, any event that you define, the chance that an event will occur will be between 0% and 100%. Makes sense? दूसरा axiom क्या कह रहा है? दूसरा axiom is saying कि the probability that something will occur if you perform the experiment, कोई outcome आएगी उसमें से, is 1. And we say that an event occurs. When any of the outcome contained in that event occurs. Since everything is contained in S, so that means कि जब experiment perform करेंगे कोई ना कोई outcome तो आएगी. So the probability of S is 1. Probability of S is 1. तीसरा axiom is axiom 3 is also very interesting. For any sequence of mutually exclusive or disjoint events, E1, E2, E3 and so on and so forth. ये सारे E infinity तक जा रहे हैं. ठीक है? For any sequence of mutually exclusive events, इसका मतलब है इन दोनों का जो intersection, कोई से दो e's ले लें, उनका intersection जो है वो null set होगा. Probability, the union of I is equal to 1 to infinity EI is equal to the summation I is equal to 1 to infinity probability of EI. I will explain this in a second कि ये क्या कह रहा है. ये हमें ये कह रहा है कि if you have a sample space S और उसके अंदर events हैं E1, E2, mutually exclusive हैं E3, E4, E5, ठीक है? So the probability of the union
is equal to the sum of these individual probabilities. The sum of these individual probabilities. ठीक है? We do know that at a time इन सारे इवेंट्स में से सिर्फ एग्जैक्टली एक इवेंट अकर करेगा. कौन सा इवेंट अकर करेगा? वो जिसके अंदर वाला आउटकम जो है वो अकर कर जाएगा. जिसके अंदर वाला आउटकम अकर कर जाएगा. Only one of those events will occur. Okay? And what would be the chance of that event occurring? The chance of that event occurring is basically the number of points contained in E1 divided by S. The number of points contained in E4 divided by S. Okay? So the union of EI is equal to the sum of probabilities. This only when they are mutually exclusive. Only when they are mutually exclusive. Shiza, you have a question? Please go ahead. Yes, sir. So my question was, why are we using infinity as a limit? Don't we have an upper bound of 2 to the power n to the number of events we have? Sure. That's quite right. Since we don't know कि कितने events हैं इसके अंदर, we don't know कि how many outcomes occur कर रही हैं. Since we don't know that, इसलिए उसको infinity रखा. But yes, you are absolutely right. If we know कि the number of sample points or the number of outcomes in S is 35, so it would be 2 power 35. If it is more than 35, then it would be 2 power, whatever number is that. And that number can be as large as infinite. वो infinite भी हो सकता है. Okay, thank you. Sure. Okay, now couple of implications. What is an implication of these three axioms? पहली implication ये है कि probability of null set is 0. Probability of null set is 0. ये इसका एक proof भी है. By the way, axioms का कोई proof नहीं है. Axioms का कोई proof नहीं है because these are axioms. ठीक है? But everything else which is derived from that will have a proof. Will have a proof. So see book for proof. बहुत simple सा proof है इसका. See book for proof. एक लाइन का इसका proof है. ठीक है? Now let me come back to that implication. जहां पे हमने बड़े चुप करके कह दिया था कि कॉइन टॉस करें, probability of head जो है वो 1/2 है, probability of tail 1/2 है. Now कॉइन को टॉस करें, toss a coin. Probability of head is equal to probability of tail is equal to 1/2. How do I come up with this now? ये मैं कैसे 1/2? How do I say कि ये 1/2 है? So if the coin seems fair, that head and tail are equally likely to occur, then I can use axiom 1, 2, 3. इन 3 axioms को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ कि ये 1/2 होगी. कैसे? 1 is equal to probability of S. This is my axiom 2. This is my axiom 2. This is equal to the probability of head union tail. Head और tail की probability इसको. Why do I write that? I write that because S has only 2 outcomes. या head आएगी या tail आएगी. So this would be equal to H and T are mutually exclusive. See, H and T are mutually exclusive. So using axiom 3, I can write it as P of H plus probability of tail. ठीक है? This is axiom 3. Axiom 3 ने यही कहा था ना कि यूनियन आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का हो तो उसको सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज के तौर पे लिख सकते हैं. So that's exactly what I have done. Union of mutually exclusive events written as separately sum of the probabilities. ठीक है? Now if head and tail are equally likely, as I would expect in the case of fair coin, ठीक है? Then 1 will be equal to probability of head, which is P, and probability of tail, which is also P. This implies that P is equal to 1/2. ठीक है? No magic, no nothing. ठीक है? One last quick example before we break is example
toss a dice. So 1 will be equal to probability of S. This is my axiom 2. This is equal to the probability that you have union I is equal to 1 to 6 EI. And what is EI? EI is that you will see the face I. You will see the face I. So this would be equal to summation. Each of these EIs are mutually exclusive. I is equal to 1 to 6. I is equal to 1 to 6. Probability of EI. Why? Because they are mutually exclusive. And I can write this as, since this is a fair dice, if this is a fair dice, then this thing is constant. This thing has to be constant. Why? Because this is a fair dice. अगर fair dice है तो probability 2 और 3 आने की जो है वो फर्क नहीं होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए, वो कोई constant number होगा, constant number होगा तो मैं summation से बाहर खींच के ले जाता हूँ. Let's say वो constant number वो p था, and summation I is equal to 1 to 6 of 1, ठीक है, which is 6p, ठीक है, which implies that p is equal to 1 over 6. ये बिल्कुल उसी तरह जैसे 1 over 2 यहाँ पे शो कर दिया, उसी तरह से ये यहाँ पे 1 over 6 शो कर दिया. Now, next time we will talk about some propositions. I will not go through the proof, but I will show next time that probability of E complement is 1 minus probability of E. ये भी हम show कर सकते हैं, and we can show this. I will upload some notes जिसके अंदर ये इनका proof show किया होगा. Next time we will save class time. एक और शो करेंगे हम यहाँ पे कि if E is a subset of F, then probability of F is always greater than or equal to probability of E. This makes sense कि if E is a subset of F, then probability of F is always greater than or equal to E. तीसरी चीज जो हम शो करेंगे वो ये शो करेंगे कि probability of E union F, where E and F not necessarily mutually exclusive. Not necessarily mutually exclusive. तो I would have the ये हमें अगर E और F mutually exclusive होते तो मैं इसको ऐसे लिख देता, E and F. Okay. So this is E and this is F. This is E and this is F. Now, if I write this, then I'm double counting. कैसे? ये रेड वाला एरिया और ये ब्लू वाला एरिया. There is some intersection between the red and blue guy. So if I write this, that means this red and blue intersection area is being double counted. So I have to subtract that. वो एरिया क्या है? That area is E and F intersection. So this has to be E and F intersection. So this is a very important result. We will extend this next time. इसके proof हम नहीं show करेंगे. I will upload some notes. For details of these three. ठीक है, और class time हम जो है वो next time save कर लेंगे. Next time we will also talk about the sample spaces with equally likely outcomes. So I will finish the lecture today here. If there are any questions, तो पूछ लें. Sir? Yes, Ibrahim? Sir, Miqdad. हेलो सर जी, मेरा सवाल ये था कि जी मिकदाद सर आपने बोला था कि इवेंट्स कैन बी डिफाइंड के ये आ जाए. मैं कह रहा था कि कैन एन इवेंट स्पैन मल्टीपल ट्रायल्स के, मतलब कैन इवेंट ए बी के पहले ट्रायल में 1 आया और फिर सेकंड ट्रायल में 2 आया? आंसर इज यस. द आंसर इज यस. तो आप यूं समझ लें कि वो एक फिर सुपर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और उसके अंदर एक इवेंट होगा. Thank you. जी, we will deal with that. अभी moving forward
नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम वो उसको हैंडल करेंगे. Alright. Sir, in the dice rolling example, in the end, जो summation है, जी. इसमें हमने P E I को हमने P को हम बाहर ले गए थे और फिर E I को हमने 1 बना दिया था. हाँ तो हाँ ये इस तरह किया हमने. हाँ. सो आप ये बात कर रहे हैं कि I इज इक्वल टू 1 to 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, ये वाली थी ना. जी. हमने कहा कि ये जो चीज है, दिस गाय हियर इज ए कांस्टेंट. ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं ये कर देता हूँ कि I इज इक्वल टू 1 to 6 और ऑफ कोर्स दिस वाज इक्वल टू 1. ठीक है, I इज इक्वल टू 1 to 6, इसको मैं ये P कर देता हूँ. ठीक है, जी. ठीक है, कांस्टेंट कर दिया ना, एक कांस्टेंट P का कर दिया. ये यहाँ पे I पे डिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं है. दिस गाय इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, तो दिस इज ए कांस्टेंट. ठीक है, अब इसमें से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको P प्लस P 6 दफा लिख दें तो 6P आ जाएगा. या अगर इस P को हम बाहर निकाल लें समेशन से, ये P को समेशन से बाहर निकाला, I इज इक्वल टू 1 to 6, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर आपके पास 1 रह जाएगा ना, P मल्टीप्लाइड बाय 1. P जो है वो P मल्टीप्लाइड बाय 1 था, तो 1 को 6 दफा आप ऐड कर लें, वो भी आंसर 6P आ जाएगा आपके पास. ठीक है, जी. Does सर that और make sense? या आई अंडरस्टूड सर. और ये P E I हमने कांस्टेंट कर दिया बिकॉज बिकॉज हमने ये कहा कि डाइस फेयर है, जो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है वही 3 के आने की है, वही 4 के आने की है, वही 5, वही 6. ठीक है, ओके. Yeah. ठीक. अगर डाइस फेयर ना होती तो फिर ऑब्वियसली ये आंसर ना होता. ओके. थैंक यू. ग्रेट. और कोई सवाल? कोई और सवाल नहीं? ठीक है, if there are no more questions then I will stop the share and then I will upload these. मैंने कहीं एक जगह पे इसको थोड़ा बेहतर करके लिखे हुए नोट्स, और I will upload those notes on LMS. ठीक है, great. See you on Thursday.